first we have to know SAP is the ERP product. Okay, ERP. Okay. है ना? Okay. Just like a Okay. uh, your company I4 using PAN also used by your company long back. So Yes. that is the example of ERP. है ना? ERP stands for Yes. Yes. Enterprises Resources Planning. So simple definition of ERP is ERP is not a software. It is a management tool. ERP is a management tool which used by most of the company organization for managing their business process in the different departments, such as account department, sales department, purchasing department, production department, HR department, right? So Yes, sir. ERP give a better platform to manage and control their business process. For example, I am the Yes, sir. account department. My department work is to manage all the profit and loss statement, to prepare the balance sheet, to do all the financial transaction. So SAP give a more flexibility. In my organization, we have a sales department. We know what are the process in the sale, how to approach to the client, customer, what product we have designed product or finished goods. So and how we doing the sales process from inquiry, quotation order, and billing process. So this is different department. We use the different SAP module. Okay. So in the Yes, sir. ERP, actually concept using ERP concept is very clear. It is a one of the management tool. It give a better control for the department organization. Just like in every organization, we have a sales department, purchasing department, account department. It give a control to the different department, and also give a complete flexibility and quick decision for prepare the report also. So that is lots of advantage in the ERP. So there is a numbers of ERP in the available in the market. Okay, but SAP is the one of the market leaders. Okay, SAP is the one of the market leaders, and SAP has more than 60 plus models in the market. Okay, it has more than 60 plus model in the market, right? Correct. So, huh. So what advantage of SAP? If your SAP has more than 60 plus module in the market with a market share of 70%, that means SAP is a complete solution for all the department in an organization. ठीक है अभी कोई भी कंपनी क्या चाहती है व्हाट कंपनी वांट वन सॉफ्टवेयर मैनेज ऑल द डिपार्टमेंट प्रोसेस ना ऐसे ही चाहती है ना कंपनी ऐसा नहीं है कि Correct. कंपनी कहती है कि नहीं प्रोडक्शन के लिए हम बान यूज करेंगे सेल्स के लिए हम एसएपी यूज करेंगे अकाउंट्स के लिए आई4 या कोई और फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इससे इससे प्रॉब्लम क्या होता है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इफ कंपनी यूजिंग द मल्टीपल सॉफ्टवेयर फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट कॉस्ट इफेक्टिव करेक्ट नो ट्रांसपेरेंसी क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना एक डिजाइन एनवायरमेंट है तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है तो कंपनी क्या Correct. बोलती है कि व्हाई नॉट वी कैन हैव वन सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प टू द which give a solution for all the department organization. So SAP is the one of the best in the market because it has more than 60 plus module. बहुत सारे मॉड्यूल हैं टेक्निकल फंक्शनल कोई भी डिपार्टमेंट इफ यू टेल मी एनी डिपार्टमेंट नेम इन योर एनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो वी हैव वन मॉड्यूल फॉर दैट ठीक है कोई भी Correct. डिपार्टमेंट हो कंपनी का उसके लिए एक मॉड्यूल है Yes, sales sir. for sales SD, account finance and controlling, for material management, purchasing, production planning for production department. Okay, HR. We have CRM, customer relationship management, also for marketing department. So there's numbers of modules we have in the SAP. And that is the reason SAP is the one of the market leader. It has more than 70% of market share. At present, SAP ERP package holds 70% market share in the ERP. Rest of the 30% for other ERP in the market. So there no other package is available in the market as SAP has because it has complete solution. Okay, for the company for organization. But if you Yes. compare with the SAP with other module, other ERP also, Oracle भी बहुत बड़ा है ERP है ना, it's a well-known ERP. In fact, Oracle is a competitor of SAP. But Oracle not give us complete support for all the department. It is basically used by manufacturing industry. Yeah, we can say finance-based company, they use the Oracle software, like for database management. Just like you have told me कि earlier your company use BAN software. BAN actually only designed for production-based company. The Oh, production-based company BAN software use करती है. अब BAN is not used for sales department. BAN is not used for account department. Only for production-based company they use the BAN. PeopleSoft that okay. is expertise in HR. Siebel that is for customer relationship management. जैसे अदर अलग अलग ERP हैं, they are having the different department expertise. जैसे एक छोटा सा ERP टैली टैली एक छोटा सा ERP टैली is also ERP but tally is only support for the accounts it can manage only account
but tally will not support the other. Same for other production also, one also, that not used for other department. तो क्यों ना कंपनी चाहेगी कि एक ही सॉफ्टवेयर से उनके सारे डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन हो जाए. So that's why they prefer always SAP. Okay. तो एसीपी का एक छोटा सा एक ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं. इट्स लाइक व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट द हिस्ट्री ऑफ द एसीपी. तो एसीपी एक्चुअली जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है. इट इज नॉट ए इंडियन सॉफ्टवेयर, इट इज जर्मन. तो एसीपी को जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं एसएपी, ई डबल एसएपी, एसएपी. ओके. Okay. तो एसीपी वी कैन नॉट से लाइक सैप. अब सैप बोलना गलत हो जाएगा, है ना. जैसे कैसे यूएसए को हम यूसा नहीं बोल सकते, ऊसा नहीं बोल सकते, यूएसए बोलेंगे. Correct. तो बहुत लोग गलती करते हैं. सैप 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 इज नॉट ए करेक्ट वर्ड. एसएपी है ना, SAP. क्योंकि एसएप जर्मन में है, लेकिन एसएपी का दैट इज द फुल फॉर्म. एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि नंबर्स ऑफ सिस्टम, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. ओके. And SAP actually started in very long back in 1972. So we can say like SAP is implemented in Germany in 1972, and there are 4 people, actually they are ex-IBM employee, involved in implemented of SAP. ठीक है. और the SAP is now number one the old ERP processing. ठीक है. अभी SAP का ये जो उन्होंने स्टार्ट किया 1972 में, क्या था, what is the reason? Actually they work with the IBM company. तो आईबीएम कंपनी के पास एक क्लाइंट था, जेरोक्स, जेरोक्स बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि जेरोक्स कराने जा रहे हैं. जेरोक्स इज नॉट ए वर्ड टू प्रिंट, फोटो कॉपी बोल सकते हैं, फोटो कॉपी करने जा रहे हैं ना. तो जेरोक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी वर्ल्ड वाइड. जेरोक्स बहुत बड़ी कार्बन की कंपनी है. तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए कि दैट हेल्प टू ऑल द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जिससे वो सारे डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन हो जाए और सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो सॉफ्टवेयर. तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और कब लगभग 50% हो गया था उनका. लेकिन कुछ ये इंटरनल इशू हुआ उन कंपनी के साथ और क्लाइंट के साथ, तो उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया कंपनी. जब उन्होंने देखा कि हमने खुद ही प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया है, तो क्यों हम अपना नाम दे दे. तो उन्होंने एसएपी नाम दे दिया. ठीक है. वो उस समय उन्होंने एसएपी नाम दिया, और स्टार्टिंग में उन्होंने उतना मार्केट में उतना उनका कोई डिमांड नहीं था, तो टाइम लगा उनको एस्टेब्लिश होने में मार्केट में. तो 1972 में स्टार्ट किया. 1992 में वो काफी मतलब बूमिंग पीरियड पे आ गया, मतलब काफी मतलब मार्केट स्टेबिलिटी आ गई उसकी. तो एक छोटा सा Okay. हिस्ट्री है एसएपी के बारे में. ठीक है. Yes, sir. और यहाँ पे वी हैव ए लॉट्स ऑफ एडवांटेज इन एसएपी. अभी सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे मैंने बताया कि इट इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट. कोई भी कंपनी चाहेगी कि एक ही सॉफ्टवेयर से सारे सॉल्यूशन हो जाए, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है. दैट्स द रीजन एसएपी हैज बैग्ड 70% ऑफ मार्केट शेयर. दूसरा सेकंड मोस्ट एडवांटेज एसएपी क्या है, इट इज ए सिंपल इंटीग्रेशन बिटवीन वर्ड. इंटीग्रेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्टेड, कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. तो Okay. ये एक एडवांटेज है कि इट इज इंटीग्रेटेड बिटवीन मॉड्यूल, यानी कि अगर हम वी आर इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, तो वी आर कनेक्टेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट आल्सो, वी आर कनेक्टेड टू द फाइनेंस मॉड्यूल आल्सो, वी आर कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग आल्सो. तो इसका क्या एडवांटेज है कि इफ यू डू ऐसे हम बोल सकते हैं एसएपी इज ए टाइटली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट. तो इफ यू डू ट्रांजैक्शन इन वन डिपार्टमेंट, simple, what is the benefit of integration is, if you do transaction in one department, it automatically update that particular information in another department या other department where it required. जैसे कि एग्जांपल अभी आपने बताया कि मैंने क्या करता है, अभी what we do, take the requirement from the client, we have to convince them to this product will be help to power saving. तो we just give the quotation and ask to their requirement, and जब आप requirement लाते हैं तो where you send this requirement, which department they will take initial step to Manufacturing. manufacture the Production. good. हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उससे पहले भी एक डिपार्टमेंट आता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट, उनका भी रोल Correct. होता है ना. Correct. अगर रॉ मटेरियल Raw है तो material ठीक है, नहीं है procurement. तो परचेज द रॉ मटेरियल. तो अभी क्या है कि अगर आपने जैसे व्हेन वी कलेक्ट द ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइंट, so when you collect the order from the client, automatic that information will be updated in the purchasing department, production department कि ये ऑर्डर आया है, अब हमको इतना प्रोडक्ट डिजाइन करना है और बना के देना है. क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट में कोई काम होता है, दैट इंफॉर्मेशन विल अपडेट अदर डिपार्टमेंट जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट, तो उसको पता चल जाता है. तो ये इंटीग्रेशन से एक बेनिफिट होता है कि हमको ये नहीं कि उस डिपार्टमेंट को इंटरनली बताना पड़ेगा जाके कि ये प्रोडक्ट ऑर्डर आया है तो इसके ऊपर आपको ये काम करना है, इतना ये टाइम लगेगा. सब कुछ उनको इंटरनली चला जाएगा. इतना डेडलाइन है, 4 वीक है या 2 वीक है, दैट ऑल गेट इन्फॉर्मेशन. ठीक है.
That is the integration. Yes. Clear? This is the one of the advantage. Yes. थर्ड एडवांटेज ऑल्सो इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज कह सकते हैं। ये एडवांटेज जो है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एसएपी क्या बोलता है कि अब ऑब्वियसली योर कंपनी गॉट है 12 डिवीजन है ना, 12 है ना, 10 से 12 डिवीजन 14 करेक्ट। 14 14 14 तो है सर। 14 है 14। अब आप बताओ कि 14 डिवीजन जो है सबका अपना अलग बिजनेस कॉन्सेप्ट होगा, सबका अपना बिजनेस प्रोसेस होगा, है कि नहीं? करेक्ट। सबका एक जैसा तो करेक्ट। होगा नहीं। तो अब एक ही कंपनी जो है क्लाइंट है गॉट है, उसके 14 डिवीजन है, 14 का ही अलग अलग बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है। तो एसएपी क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल योर एनी डिपार्टमेंट या योर व्हाट इज वन डिवीजन दे वांट टू इंप्लीमेंट एसएपी, तो व्हाट दे से लाइक दिस इज माय रिक्वायरमेंट, दिस माय बिजनेस प्रोसेस एंड आई वांट सेम इन एसएपी। यही ना बोलेगी कंपनी की, ये तो बोलेगी नहीं कि आप की जो सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से मेरे मेरे हम चेंज कर लेंगे, नहीं वो बोलेगी नहीं आप मेरा जो बिजनेस प्रोसेस वही रहेगा, आपको सिर्फ उसमें मैप करना है, ये नहीं कि आपको चेंज करके देना है। तो क्या पॉसिबल है स्टैंडर्ड में? नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एसएपी है उसमें तो ये नहीं है कि चेंज हम कर सकते। तो एसएपी क्या बोलता है कि अभी क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट जो एसएपी के स्टैंडर्ड विल नॉट फुलफिल, इफ देयर रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड एसएपी स्टैंडर्ड, देन वी हैव ऑप्शन टू कस्टमाइजेशन चेंजेस इन ओके। टेक्निकली। ओके, कि हमको डिजाइन करना, जैसे आपका कैसे रिक्वायरमेंट आपने लिया तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करवाते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी कि प्रोडक्ट करेक्ट। रेडीमेड है और आपने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, नहीं। तो व्हाट देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट इन एसएपी we do. If your requirement is not matched to the SAP standard, we have option to do the customization changes. Okay, तो दैट इज द वन। इसलिए बहुत सारी कंपनी एसएपी प्रेफर करती है कि अगर हमको कुछ चेंजेस भी करना हो तो एसएपी में हम करके दे सकते हैं। ये नहीं कि मेरा एक सॉफ्टवेयर आप यूज करो बस इसमें आप, नहीं, वट एवर द रिक्वायरमेंट वी डू चेंजेस एसएपी एज पर द रिक्वायरमेंट। ये करेक्ट सर। सबसे बड़ा एडवांटेज है। और बिजनेस सूट का मतलब होता है कि अब अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ। बहुत सारे एसएपी के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, छोटे छोटे कॉस्ट भी ज्यादा नहीं। जैसे एसएपी का एक सिस्टर कंपनी है बिजनेस वन, एसएपी बिजनेस वन है ना, वो भी एक कंपनी है। तो वो छोटे मिडिल लेवल की कंपनी या लोअर मिडिल लेवल कंपनी के लिए सुटेबल है। तो इस तरह कंपेटिवली कहा जाए तो एसएपी जो है totally related to business suit which basically based on requirement, उसी के हिसाब से हम उनको कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर है आप उतनी पैकेज में आपको लेना, नहीं। तो दैट इज एडवांटेज। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर दे यूजिंग एसएपी, मोर देन 15 डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर दे यूजिंग द एसएपी, रिटेल, फार्मा, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, एरोनॉटिक्स, सिविल सर्विस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, आईआरसीटीसी, सीसीएल। तो बहुत सारी कंपनी इंडस्ट्री सेक्टर दे यूजिंग द एसएपी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। क्लियर? यस सर। अब नाउ कम टू द एसएपी मॉड्यूल। एसएपी मॉड्यूल, एसएपी देयर आर two types of module, but here I have mentioned all the module. These are pure functional module. Functional module means we don't have required any, we don't have any technical knowledge. Okay, these modules are called functional module. So in फंक्शन। initially in the module we are actually part of logistic, logistic के अंडर में आते हैं हम लोग। logistic के अंदर में we have three module: sales and distribution, PP production planning, MM material management. This is called logistic. Logistic ओके। is the main, but under that we have a sub module SD, MM, PP. Simple SD is relevant to sales, PP production price relevant to production area, manufacturing, MM purchasing, raw material. तो ये module relevant to the different department organization. And we ओके। have a finance, account management for account department. If I CEO is a module for finance, then numbers of modules we have: HR, human resource for HR department, payroll, time management, QM, quality management, PM, plant maintenance. There are many modules in the SAP. Or SAP module actually divided in two. Yeah, we can say there are two types of module SAP: functional and technical. ओके। फंक्शनल मॉड्यूल के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर एनी टेक्निकल नॉलेज। दैट मॉड्यूल ओनली रिक्वायर्ड द योर एक्सपीरियंस इन प्रायर। व्हाट यू एक्सपीरियंस, जैसे कभी किस आप यू आर कंफ्यूज विद योर व्हिच मॉड्यूल यू गो, एमएम और एसटी। तो अभी योर एक्सपीरियंस सेल्स, तो दैट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अगर आप अभी प्रेजेंट में आपका एक्सपीरियंस एमएम पे होता है, परचेजिंग पे, देन यू मूव टू द एसएपी एमएम। ठीक है, दैट करेक्ट। डिपेंड करता है व्हाट योर प्रायर एक्सपीरियंस, है ना। तो व्हाई this important कि you have experience in that particular department, you know the process of that department, right? अगर finance में काम किए हैं तो you know how to the accountability, account management, balance sheet,
जनरल का मतलब क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट पे काम किए हैं अभी वर्किंग, तो यू नो हाउ टू अप्रोच टू द वेंडर फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, व्हाट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द गुड्स, इशूइंग द गुड्स एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो ये मॉड्यूल एमएम है। पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, those who work in the production area know the production department, how they are manufacturing good, MRP, material requirement planning, execution. So production planning. Sales and distribution relevant to sales department. HR module, that is for payroll, time management. PM, plant maintenance, internal plant maintenance we do. So plant maintenance, quality management, QM. So different module which is relevant to the different department. This module is purely require the functional knowledge. Okay, but there is technical module, be ABAP and basic. This module require the programming background. यानी कि आपका बैकग्राउंड तगड़ा होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, नॉलेज, प्रोग्रामिंग नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज, टेक्निकल कोडिंग नॉलेज, है ना। तो दिस Yes. some other technical module also we have, but this is the two most important module in the technical part. ABAP, Advanced Business Application Program, और बेसिस is a business application software integration solution. अब ये दो मॉड्यूल का काम क्या है? ABAP का काम है टेक्निकली प्रोग्राम बनाना, है ना। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, एक मिनट, है ना, कस्टम बिल पैकेज। कस्टम बिल पैकेज मैंने क्या बोला कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इफ नॉट फुलफिल्ड विद एसएपी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, तो वी डू द चेंज इन द सॉफ्टवेयर, कस्टमाइजेशन, है ना, राइट न्यू प्रोग्राम। Yes, तो sir. ये सारी चीजें ABAP वाले करते हैं। तो बट वी हैव टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द ABAP team. Because we are in the Yes. front end, we are talking to the client directly. So whatever requirement we collect from the client, that time we know what their requirement and how we're going to map in the SAP system. And that time we also know their requirement not fulfill the SAP standard क्योंकि उनकी requirement के हिसाब से SAP में वो fit नहीं हो रहा। So we have to talk to the technical consultant ABAP to provide their proper information about the client requirement, and they have a solution. What solution? To write the new program, change the software, design the some custom package, custom screen, custom area, you know, those they will do ABAP. And there is a Okay. basis. Basis is actually one of the also technical model. This is related to IT administration या सिंपल भाषा में बोला जाता है नेटवर्किंग गाइड। यानी हर कंपनी में एक ट्रबल शूटर होता है ना, ट्रबल शूटिंग करता है। यानी कोई यूजर आईडी पासवर्ड लॉक हो गया, सिस्टम में कुछ इशू आ गया, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है, वीपीएन में प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई चीजों में, तो ये बेसिक वालों का काम है। इनका काम है कि यूजर आईडी प्रोवाइड करना, एक्सेस को देखना, ये सारी चीजें उनका काम है। ठीक है, अब बेसिक का क्लियर। और Okay. एसीपी के पास थ्री थ्री टायर आर्किटेक्चर है। एसीपी आर्किटेक्चर डिजाइन विथ थ्री लेयर। थ्री टायर में थ्री लेयर, जैसे ट्रेन में कैसे होता है, टू टायर थ्री टायर, है ना। टू टायर में Okay. टू Correct. अपर एंड लोअर सीट, थ्री टायर में अपर मिडिल एंड लोअर सीट। ठीक है, तो इसमें भी Correct. एसीपी में थ्री लेयर है। थ्री लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल टेल यू वेरी सिंपल। थ्री लेयर मीन थ्री टायर। फर्स्ट फ्रंट एंड लेयर। फ्रंट एंड लेयर मीन क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, यानी कि एसीपी जो है कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन गोदरेज एम्प्लॉय, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, गोदरेज कंपनी के अंदर में वो सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, एज ए यूजर है। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, यानी फ्रंट एंड लेयर। Okay, when you Yes. access to the software, you can see the multiple option is there, है ना, सारे options है वहाँ पे। तो that option actually built on the application programming layer। ठीक है, प्रोग्रामिंग जिसको या तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है तो ठीक है, if then any change in the program, ABAP, यानी ABAP will do the change in the program। और डेटाबेस लेयर का मतलब है जहाँ पे डेटा ट्रांजेक्शन डेटा स्टोर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमको वी वांट टू बुक द रेलवे टिकट, so what we do, we open the ICTC website. So they ask, it asks what's your user ID password। तो हम क्या है, एज ए फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। हम यूजर आईडी पासवर्ड हमने टाइप किया, एक्सेस कर गए। जैसे हम एक्सेस किए उस वेबसाइट पे, विल सी द मल्टीपल ऑप्शन, train name, train date, train journey, from to destination। Actually that was built on the application layer। वो सारे application पे बने हुए, उसको बोलते हैं application layer। और database Okay. layer, at the end of that we store the data, we save the data, that is called database layer। यही concept है three layer का। तो SAP was taking support from Oracle long back। Oracle से वो सपोर्ट दे, थर्ड पार्टी डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी, उनसे वो सपोर्ट दे रही थी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए SAP में। यानी उनका सारा डेटाबेस का मैनेजमेंट Oracle देखता था। But now HCP has replaced with their own database, HANA। HANA आ गया मार्केट में, HANA टेक्निकल। अब उनका खुद का Okay. डेटाबेस, अब उनको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो ये थ्री लेयर है, प्रेजेंटेशन, फ्रंट एंड, एप्लीकेशन मिडिल एंड डेटाबेस लेयर। तो प्रेजेंटेशन सर्वर का मतलब होता है दैट इज द फ्रंट एंड लेयर,
एनी क्लाइंट हु वांट टू इम्प्लीमेंट एसएपी, जो भी कंपनी क्लाइंट अगर एसएपी चाहती है इम्प्लीमेंट करना, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है SAP से. They have purchased the license from the SAP based on number of end user. Numbers of user means कितने यूजर है जो एक्सेस करेंगे, और वो लाइसेंस जो है यूजर आईडी जो लेती है कंपनी, दैट यूज बाय द यूजर ऑफ द, यानी एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, और वो किस पे यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे, है ना, एक्सेस करते हैं उसके ऊपर यूज करते हैं. ठीक है. और डेटाबेस एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन है जहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम डिजाइन होता है स्टैंडर्ड या फिर कस्टमाइज होता है, और डेटाबेस लेयर वहाँ पे डेटा शेप होता है, दैट इज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री लेयर. अब नाउ कम टू द प्रोफाइल इन एसएपी. In SAP, we work as a consultant. Our consultant also we have two different consultant, functional and technical. ठीक है. अब अब हम तो टोटल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हमारा एक्सपीरियंस सेल्स में है, तो वी कैन गो टू द फंक्शनल साइड टू नो द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. इसी तरह जो एमएम डिपार्टमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, परचेजिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सारे हैं अलग अलग. तो फंक्शनल कंसल्टेंट का जो, जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट, टू नो द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस प्रोसेस and according to mapping the SAP system. और टेक्निकल कंसल्टेंट का रोल क्या है, एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द SAP सॉफ्टवेयर टेक्निकली which is handled by the technical consultant. That's like that. ये हो गया from the consultant level responsibility, यानी कि we work in the TCS, IBM, Wipro, Cognizant, Accenture as a consultant. And individual means client employee. जैसे for example I am working the Accenture and my client is Godrej, and for Godrej I am going to implement SAP. तो क्लाइंट की तरफ से दो यूजर, दो के अलावा भी एक और यूजर होता है, उसको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे समझ ले. यू जस्ट अंडरस्टैंड देयर टू टाइप ऑफ यूजर, वन इज एंड यूजर, अनदर वन इज कोर यूजर. ठीक है. तो एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर इज द क्लाइंट एम्प्लॉय, है ना, क्लाइंट का एम्प्लॉय होता है. जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट, यू आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट, तो आपका काम क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी अंदर काम है उसको खरीद मॉनिटरिंग करना, उसको ही एक्सेस करना, उसी को प्रोसेस करना, है ना. तो यूर सेल्स डिपार्टमेंट to access to the SAP system for only for sales relevant work. Okay, that means you're an end user, right? End user means client employee who access to the SAP system for day-to-day transaction. और क्लाइंट की तरफ से एक और यूजर होता है, कोर यूजर. ये भी एक यूजर होता है. तो कोर यूजर क्या होता है, इंडिविजुअल तो सिंपल सा है, यू हु एक्सेस टू एसएपी सिस्टम टू डू ऑल द एक्टिविटीज, द सेल्स, परचेजिंग, प्रोडक्शन, जो भी है. बट एक क्लाइंट कोर यूजर होता है, इट आल्सो द यूजर who are involved in SAP implementation project. वो भी इन्वॉल्व होता है SAP implementation project में. तो कोर यूजर द एम्प्लॉय ऑफ द, ये भी एम्प्लॉय है, but he is having the good experience and exposure in the client business process. ठीक है. कोर यूजर का मतलब होता है कि वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर इन योर गॉडेज कंपनी टिल 14 ईयर, currently you are in 5 years in that company, same company. तो अभी आप ये बताओ कि 4 years से 5 years से आप कंपनी में, तो आपको कंप्लीट नॉलेज है कंपनी का बिजनेस प्रोसेस, सेल्स के अंदर क्या क्या होता है. करेक्ट. क्लियर सर. So let's take example. When you going to implement SAP, I am the SAP SD consultant. अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसेस का नॉलेज लेना है जिसके अकॉर्डिंगली हम SAP में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो whom I contact, to whom I talk to take all this information from the client. तो हम किससे लेंगे इंफॉर्मेशन, एक सेल्स डिपार्टमेंट का कोई सीनियर मोस्ट पर्सन, जो सेल्स हेड हो, सेल्स मैनेजर हो, सेल्स सीनियर सेल्स मैनेजर हो, जो भी हो. क्यों उससे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि वो ही हमको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो कोर यूजर का मतलब होता है द क्लाइंट का जो एम्प्लॉय होता है, हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एंड व्हाट देयर रोल, टू प्रोवाइड द क्लाइंट बिजनेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द कंसल्टेंट. यानी कंसल्टेंट को सारा प्रोसेस का नॉलेज देता है, तो उसी के हिसाब से कंसल्टेंट पे काम करता है. तो क्लाइंट की तरफ से यूजर जो एम्प्लॉय है जो सिस्टम पे काम करता है, कोर यूजर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. क्लियर. अब नाउ कम टू द एसएपी प्रोजेक्ट. इन एसएपी वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे मैंने रोल आउट अपग्रेडेशन को ऐसे ही लिखा है, लेकिन वी हैव बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, रोल आउट एंड अपग्रेडेशन. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी हु आर फर्स्ट टाइम गोइंग टू यूज एसएपी सिस्टम. ओके. द क्लाइंट मींस कंपनी, the client business process very new into the SAP system.
who might be using some other legacy system. Okay, legacy system मतलब नॉन एसएपी सिस्टम, यानी कि क्लाइंट है, जैसे आपकी कंपनी बान यूज कर रही है प्रोडक्शन, या इन्फो आई4 सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ठीक है, ईसीआरएम यूज कर रही है, तो वो अदर ईआरपी को काम पे काम कर रही है, लेकिन अब क्लाइंट क्या बोलता है कि नहीं, आई वांट टू मूव इन एसएपी, ठीक है। तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम नॉन एसएपी यानी कुछ अदर ईआरपी से एसएपी में आना है, तो वी वर्क एज वी वर्क इन इम्प्लीमेंटेशन, तो यानी पहली बार हम काम करेंगे प्रोजेक्ट पे, जो कंपनी का सारा बिजनेस प्रोसेस को मैप करेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। वंस वी इम्प्लीमेंटेड द एसएपी टू द क्लाइंट, देन यू नीड अ सपोर्ट। सिर्फ ऑब्वियसली कि जब भी हम कुछ बना के दिए तो उनको इशू आएंगे, तो वी वर्क ऑन द सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट मीन सॉल्विंग देयर इशू, प्रॉब्लम रेज बाय क्लाइंट यूजर, ये इश्यूज है, तो वी वर्क ऑन द सपोर्ट प्रोजेक्ट। और रोल आउट का मतलब होता है कि कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड एसएपी टू वन लोकेशन, ठीक है। अब कंपनी वांट टू यूज एसएपी टू अनदर लोकेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी कुछ साल पहले मेट्रो कैश एंड कैरी कंपनी का ये रोल आउट प्रोजेक्ट हुआ था। मेट्रो कैश एंड कैरी आई थिंक वहां पे है, पहली बार हम जब बॉम्बे में आए थे, तो मेट्रो कैश एंड कैरी सबसे पहले मैंने वहां देखा था भांडुप में। आपको अभी भी ये होगा ना, भांडुप में है ना, यस सर, यस सर। भांडू में है बहुत पांडु। बड़ा मेट्रो कैश एंड कैरी कंपनी। हाँ, हाँ, मेट्रो सबसे पहले मेट्रो। वही मैंने पहली बार मैंने मेट्रो कैश एंड देखा। तो मेट्रो कैश एंड कैरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो क्या है, बिग ग्रोसरी कंपनी है ना, वो बल्क बायर के लिए है, छोटे छोटे यस। बायर के लिए नहीं है। तो एसएपी हाँ। उनका क्या था कॉन्सेप्ट, एसएपी यूज कर रही है मेट्रो कैश एंड कैरी इन इंडिया लोकेशन, बट मेट्रो कैश एंड कैरी नॉट इन इंडिया ओनली, द वर्ल्ड वाइड कंपनी, दे हैव वेरियस लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अब वो कंपनी क्या कर रही थी कि एसएपी तो यूज कर रही थी इन इंडिया, बट एसीपी दे नॉट यूजिंग द अदर लोकेशन। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, अब एसीपी हम यूएस में भी यूज करेंगे, यूके में भी यूज करेंगे, अदर कंट्री में भी हम यूज करेंगे एसीपी सॉफ्टवेयर। तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट, यानी द एसीपी ऑलरेडी यूज बाय कंपनी द वन पर्टिकुलर लोकेशन एंड वांट टू एक्सटेंड एसीपी सॉफ्टवेयर टू द अनदर लोकेशन। उस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, रोल आउट प्रोजेक्ट। ये डोमेस्टिक में लेवल में भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी एक ही कंट्री में, एक अहमदाबाद में है एक ब्रांच, एक मुंबई में है, मुंबई में हम ऐसे भी यूज कर रहे हैं, अहमदाबाद में कोई और ईआरपी यूज कर रहे हैं। अब कंपनी बोलती नहीं नहीं, अब अहमदाबाद में भी एसएपी होगा, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी है एसएपी, सिर्फ एक्सटेंड कर देना रहता है। और अपग्रेडेशन मीन्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, एंड यू नो इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वी ऑलवेज बी अपग्रेड, हर साल, एक साल, 2 साल में कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है। तो दोज काइंड ऑफ अपग्रेडेशन, जैसे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में हम बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट है एस फोर हाना, जैसे ईसीसी पे था क्लाइंट, अभी एसीसी पे था, अब वो क्या बोल रहा है कि अब एस फोर हाना पे हमको आना है, ठीक है, एस फोर हाना पे आना है। तो एस फोर हाना पे आने के लिए वो क्लाइंट पे क्या करेगा, फ्रॉम ईसीसी टू एस फोर हाना, ईसीसी द ओल्ड वर्जन है ना, ओके। ईसीसी टू एस फोर हाना, है ना, अभी लेटेस्ट क्या है, एस स्कोर फोर क्या है? हाना। एस फोर में क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, एस फोर में सॉल्यूशन बेस्ड, इसका फुल फॉर्म हम बता देंगे। एस फोर जो है लेटेस्ट वर्जन। जैसे अभी क्या कर ओके। रही थी ना कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऑन प्रेमाइसिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, यानी कि सर्वर, हर का सर्वर रूम होता था, वहां पे डेटा रहता था, ठीक है। अब कंपनी ओके। क्या कर रही है कि अब वो क्लाउड पे आ गई है, क्लाउड के ऊपर ही रह रहा है डेटा, उससे रिस्क फैक्टर कम हो गया है। तो इसके बारे में एक अलग से कल एक और सेशन लेंगे, इस एस फोर हना और ईसीसी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। एस फोर हना ओके। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि अब पहले हम मोबाइल के मेमोरी कार्ड में डेटा रखते थे, है ना, इनबिल्ट मेमोरी रहता था मोबाइल के अंदर, एक मेमोरी कार्ड भी होता था, उसके अंदर डेटा रखते थे। तो क्या होता था कि व्हेन वी हैव 2 GB मेमोरी कार्ड और हमने 2 GB को पूरा यूज कर दिया, तो क्या होता था, मोबाइल स्पीड स्लो हो जाता था, है ना, स्पीड स्लो हो यस। जाता था, क्योंकि डेटा ऑक्यूपाइड बाय मोबाइल मेमोरी। प्लस सेकंड रिस्क फैक्टर कि अगर कहीं मोबाइल चोरी हो गया या डैमेज हो गया, करप्ट हो गया, तो सारा डेटा चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ईसीसी था कि ऑन प्रेमाइसिस टेक्नोलॉजी, ऑन प्रेमाइसिस यानी जैसे गॉदरेज कंपनी है, उसका एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम में वो एसएपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उनका कोई भी काम हो रहा है तो सर्वर पे हो रहा है। अब क्या बोलता है कि क्लाइंट की नहीं है, मुझे एक सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमको डेटा क्लाउड में रखना है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से रिट्राइव कर सके, डेटा को ला सके। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही सर्वर पे कंटिन्यू बहुत सारा काम हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सर्वर स्लो हो जाता है, बोलते हैं ना रेलवे काउंटर पे खड़े हैं, सर्वर स्लो हो गया, सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन अचानक होने लगते हैं उसी सिस्टम पे, तो सर्वर कॉलेज भी कर जाता है, ये डाउन भी हो जाता है, और कभी कभी डेटा भी लॉस हो जाता है। तो ये सब
उससे बचने के लिए एक हाना क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी आया जो एसएपी में S4 हाना। जैसे और भी इंडस्ट्रीज में जैसे अमेजोन है, अमेजोन वेब सर्विसेज है, सेल्स फोर्स है, ये सब क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बेस्ट एग्जांपल, हम पहले इन मेमोरी पे डेटा रखते थे, अब गूगल ड्राइव में रख रहे हैं, वो क्लाउड हो गया। गूगल ड्राइव एक क्लाउड है, ठीक है। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना खुद का क्लाउड है, तो अब हमको ऑप्शन भी देता है कि आप क्लाउड में डेटा रखिए, ठीक है, तो उसे सेव रहता है। तो ये S4 हाना का कॉन्सेप्ट है, क्लियर? यस सर। ये हो गया। अब आते हैं, हाँ, 1 सेकंड। नाउ अब ये समझ में आया, एसएपी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। Implementation first time, support for already implemented SAP by client. We give a support to the client. Rollout means extend the SAP to the another location of the client. Upgradation from old to new version. That is called S4 यस IC to the S4HANA. Okay. Now अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, SAP SD मॉड्यूल पे, ठीक है। तो जब भी हम whenever we going to implement SAP to the any company any client, कभी भी हम कंपनी के इम्प्लीमेंटेशन पे जब हम काम करते हैं, तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव रिक्वायर्ड देयर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वहाँ उनका बेस क्या है, उनका फाउंडेशन क्या है, तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, है ना। तो जब भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम लेते हैं, तो वी हैव टू नो what their requirement in that department. So whenever we are implementing SAP to the any client, first we have to collect the information about the client structure of the organization, यानी कि उनके कितने सारे ऑफिसेज हैं, ब्रांच कितने हैं, प्लांट क्या है, वेयर हाउस कितने हैं, है ना। तो अभी इन दिस डायग्राम यू कैन सी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटरकनेक्टेड। जैसे कि यहाँ पे अंडर द डॉट लाइन वी हैव ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, we have a distribution channel, we have a division, we have a sales office, sales. Yeah, it's a part of sales and distribution model. So there is other area also, business area, financial management area, controlling area, credit control area, company board. These are the part of finance module. ये finance module का part है, ठीक है। फिर there is a plant, storage location, warehouse. That is the part of material management, यानी logistics. And shipping point, also one of the other module department, logistic execution department. तो ये अलग अलग मॉड्यूल के कंसल्टेंट विल बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड वी वर्क फॉर द ओनली वन मॉड्यूल एंड वी डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है। अभी कभी बात करते हैं अपने मॉड्यूल के ऊपर, है ना। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। हर कंपनी का एक सेल्स हेड डिपार्टमेंट होता है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। It is only responsible for monitoring all the sales process in the different location. It is the organization that basically take the strategic decision related to sales, or we can say like it is the organization that where we find the director of the sales, head of the sales department, right? तो ये हमारा काम है, एज ए एसडी कंसल्टेंट वी डिजाइन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, very simple. Distribution channel means the way by which product is to the customer, yeah, the way of distributing the good to the customer. That is called distribution channel. Best example, distributor, dealer, direct sale, wholesale, retail, and division. Division is a product line, or we can say group of products which share a similar character. Just for example, in your company organization, just like a company FMCG also, food product also. The food product may the company has various kind of product, liquid item also, food item also, है ना? Electronic यस item also, है ना? That is called division. Division is the product line, grouping the product which share the similar value, character, nature. That is called division. Just like electronic division, food division, cosmetic division. That is the concept of sales as a division. और combination of these three, इन तीनों को combine कर दें, which is called sales area. Sales is we can't say like a physical entity. It is a combination of sales organization, distribution channel, division. तो ये it's playing a very important role in the sales process. उसके बारे में हम लोग देखेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो सेल्स ही रखें, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वी कम टू द नेक्स्ट extreme below, there is a left side, sales office. Sales office का simple, the concept is sales office very simple. It is physical location where we do the sales. Who do the यस sales manager, just like a Godrej का भी बहुत सारे offices होंगे, branches होंगे, that is called sales office, where you performing the sales. And inside the sales office, there is a group of employees within the sales office working for the different activity.
दैट इज कॉल्ड सेल्स ग्रुप। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अब आते हैं क्लाइंट एंड कंपनी कोड। क्लाइंट एक्चुअली नेम इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेट ग्रुप। जैसे गोदरेज क्या है, गोदरेज कॉर्पोरेट ग्रुप है ना, गोदरेज नाम है। तो गोदरेज के अलग अलग कंपनी कोड है। गोदरेज इंटीरियर में है, गोदरेज इन कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी में है, गोदरेज इन एफएमसीजी में है, गोदरेज इन एनर्जी सॉल्यूशन में है, जस्ट लाइक यूर इन एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है। तो अभी क्या है, एक क्लाइंट है, गोदरेज है, उसके कितने सारे कंपनी कोड है, बहुत सारे कंपनी कोड है, करेक्ट। करेक्ट। Goddess interior also, Goddess food also, Goddess property also, Goddess energy solution also. So can it possible all client or company has the same business process? Goddess ही का पार्ट है, एनर्जी सोल्यूशन का अपना बिजनेस प्रोसेस है, इंटीरियर का अपना बिजनेस प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है कि हर कंपनी कोड का अपना बिजनेस प्रोसेस है। जब जबकि वो एक ही कंपनी का पार्ट है, गॉडेज का ही पार्ट है, लेकिन उनके अलग अलग डिवीजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपनी कोड। तो क्लाइंट मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप, पेरेंट, क्लाइंट मीन पेरेंट, कंपनी कोड इज चाइल्ड, चाइल्ड है ना। तो वन क्लाइंट कैन हैव मेनी कंपनी कोड ना, एक क्लाइंट के बहुत सारे कंपनी कोड हो सकते हैं। गॉडेज के बहुत सारे कंपनी कोड है, गॉडेज इंटीरियर है, गॉडेज फूड है, गॉडेज एफएमसीजी है, गॉडेज इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी है, दैट इज मल्टीपल कंपनी कोड। तो ये जो क्लाइंट इन कंपनी कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डन बाय एफआई कंसल्टेंट। फिको कंसल्टेंट का काम है, एफआई कंसल्टेंट का काम है डिफाइन करना। क्लाइंट है, कंपनी कोड है, बिजनेस एरिया फॉर बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटी, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो आपको क्रेडिट कंट्रोल में मतलब क्रेडिट देना, कस्टमर को क्रेडिट देना, वो एक डिपार्टमेंट है। ये द पार्ट ऑफ फाइनेंस मॉड्यूल। नाउ लेफ्ट साइड यू कैन सी प्लांट। प्लांट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर वी डू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। ठीक है, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लांट एंड वी आर आल्सो कनेक्टेड टू द प्लांट, है ना। अभी जब जैसे कैसे एग्जांपल में आपने दिया कि आप रिक्वायरमेंट लाते हैं क्लाइंट का, तो आप किसको भेजते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बना के दो, तो वो प्लांट में प्रोडक्शन होता है। तो प्लांट हो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और प्लांट के अंदर वेयर हाउस है, द प्लेस वेयर वी कीपिंग द स्टॉक देयर फिजिकली। वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस को मतलब है प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट रखा जाता है डिजाइन करके, या तो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। एंड शिपिंग पॉइंट, the point from where the product will be dispatched and moved to the customer location. Abhi example, let's tell me, once you design the product and you shipping the product to the customer, it may be shipping the product from your plant inside or going to the some other place from there it loading the truck. दोनों हो सकता है, या तो आप प्लांट के अंदर में वो शिप हो रहा है, प्रोडक्ट को आपने वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लोड किया, ट्रक में या लॉरी में, जो भी है, और आप विल सेंड टू द प्रोडक्ट क्लाइंट कस्टमर लोकेशन। तो वहां जहां पे वेयर प्रोडक्ट इज गेटिंग लोड इन द ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं शिपिंग पॉइंट, या तो इनसाइड द प्लांट या फिर आउटसाइड द प्लांट, जैसे लाइक रेलवे स्टेशन, शिप, हार्बर, एयरपोर्ट, वो दैट इज आल्सो कॉल्ड शिपिंग पॉइंट। तो उसको बोलते हैं शिपिंग पॉइंट। जहां पे द सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ शिपिंग पॉइंट क्या है, द फिजिकल लोकेशन वेयर वी डू द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द प्रोडक्ट एंड डिस्पैचिंग इट टू द कस्टमर, उस पॉइंट को बोलते हैं शिपिंग पॉइंट। ठीक है, ये 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 भी हमको जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि वी आर ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो Yes. सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, about different area and the different module. Then after we have to know about this customer master data, material master data, customer material for record, condition master data and output master data. Master data का concept very simple. Master data is the data of the client. It is the data of the client which going to upload in the system for managing day-to-day transaction in the sales. So जैसे for example in the sales, what we do generally, order process, delivery process, invoice process, right? For order, Correct. we need a customer details. For order, we need a product details. For order, we have pricing details. Okay. So it is the data which is stored centrally in the system to day-to-day transaction in the sales when it required. And it is the data cannot use change frequently, can change नहीं कर सकते जल्दी जल्दी। तो इसका एक सबसे एडवांटेज क्या है इस डेटा का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डेटा, इट विल बी सेव द टाइम फॉर द इंड यूजर। कि अगर उनको कोई ऑर्डर क्रिएट करना है तो दे कॉल द कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर द कस्टमर मास्टर डेटा। इफ दे वांट टू क्रिएट द ऑर्डर विद द पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दे कॉल द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द मास्टर डेटा, एंड दे वांट टू मेंटेन द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर डिफरेंटली डिफरेंट। तो वी हैव अ कंडीशन मास्टर डेटा। तो देयर इज 5 मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा, लिटिल मास्टर डेटा, and customer material for record, condition master data, and output master data. These are the one of the important in the sales and distribution. Customer master data, अच्छा ये यहाँ पे तो कुछ और है। हाँ, कुछ इसके बारे में इन डेप्थ हम अभी जाएंगे नेक्स्ट
सेशन में उसके बारे में और इन डेप्थ समझेंगे। अभी यहाँ पे ब्रीफ में हम सब दे दे रहे हैं। कस्टमर मास्टर डेटा इट्स कंसिस्ट ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल। मटेरियल मास्टर डेटा ऑल ओवर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट नेम, कोड, समथिंग। ओके, कस्टमर मटेरियल फॉर रिकॉर्ड एट इज स्मॉल मास्टर डेटा रिलेटेड टू कस्टमर मटेरियल नंबर, यानी कि कस्टमर का जो भी मटेरियल नंबर है इट विल बी स्टोर, कस्टमर मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, देयर मटेरियल नंबर विल बी स्टोर इन द एसएपी सिस्टम। That is the customer master info record. Condition master data, it is the data of the price of the product which is stored in the system. Condition master data all over the pricing. And output master data, it is the data for taking the output of the document. For example, we sending that print out to the customer for quotation, invoice. So we take the output master data. The customer master data, customer information, material master product information, customer material for record, customer choice name of the material will be stored. Condition master data, price information, output master data, output of the document such as printout, mail, something. These 5 master data we have to know. Then basically in the sales, we have to know the complete sales cycle process. Sales cycle, where we have different documents type for the sales cycle. We have a different item category relevant to the what item we use in sales order, finished good, raw material. Yeah, we can say like a service product. Service is also one of the product. So for service also we have different process. So we have to know the different item category. So this is the one of the simple diagram in the sales cycle. The sales cycle starts from inquiry, quotation, sales order, delivery, and billing process. And then it comes to the account department. Inquiry and quotation. It is a pre-sales activity. Pre-sales, before sale. What is the meaning Yes. of inquiry? When customer who first check the product quality, price, everything, and he do the inquiry. Customer do the inquiry to checking the product quality, price, everything. And if customer like the feature of the product, price of the product, then he has the quotation. Give me the quotation. Send me quotation. What is the product cost? What is the selling? What is the final price of this product? When you will deliver this product after the manufacturing? So these all are we send the quotation to the customer, and customer accepted the quotation. Then he do the sales order. So sales order is the final document of sales. अब यहाँ तक हम sales and distribution में we are in the sales and distribution. We have inquiry, quotation, order. But after the order, we are integrated with which module? Logistic, material management. क्योंकि ऑर्डर तो हम ले लिए लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर होगा? प्लांट से, प्लांट एंड वेयर हाउस से. दैट इज द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक module, material management. So from the plant, the product will be designed and stored in the warehouse. From that, product will be dispatched and moved to the customer location. That is called delivery process. And after the delivery process we do, then we issue the invoice to the customer, billing document, and payment processing of the customer, which is the part of account finance module. So in complete sales cycle, we start from inquiry, quotation, order, delivery, and billing process. So we have to know this process. This process is also known as order to cash process. Order by customer, payment come under the account department. This process is called order to cash process. So basically, SD module is main pillar of SD module is this process, sales cycle. So we have to know about the sales cycle in sales and distribution module, right? So we have तो different पीजीआई क्या था पीजीआई? document. हाँ, PGI मतलब पोस्ट गुड इशू. P for post, गुड G इशू. for goods issue. ओके ओके हाँ, यानी गुड्स इशू करना. पोस्ट गुड इशू के करेक्ट. बाद हम इन्वेंट्री अकाउंट में एक एंट्री होता है. आपने गुड इशू कर दिया, इन्वेंट्री अकाउंट में इट अपडेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव इशूड, हाउ मच वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इशूड, है ना. उनको एक अपडेट चला जाता है कि इतना प्रोडक्ट करेक्ट. कॉस्ट था, इसका वैल्यू इतना है, ये इशू हो गया, अब इतना क्वांटिटी चला गया यहाँ से. उसको बोलते हैं पीजीआई, पोस्ट गुड इशू प्रोसेस, राइट. और इसे तो आरईएल देखिए, क्या था नीचे? आरईएल टू अकाउंट्स. हाँ, रिलेवेंट टू अकाउंट या रिलीज टू रिलेवेंट अकाउंट, टू रिलीज टू अकाउंट. अकाउंट. ओके ओके हाँ, ओके. रिलीजिंग टू अकाउंट. कि रिलीज टू आप अकाउंट. क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट आपने इनवाइस जनरेट किया, कस्टमर को दे दिया, लेकिन वो इनवाइस आप रिलीज करेंगे कहाँ करेंगे? अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको पेमेंट मिला है कस्टमर से. ठीक है, तो वो हो गया रिलीज टू द अकाउंट डिपार्टमेंट. क्लियर? हाँ, यस सर. ये प्रोसेस है. तो इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट. दैट इज फॉर प्री सेल्स डॉक्यूमेंट. Pre sales mean like before sales inquiry, IN, two character document, IN inquiry, QT quotation. Then we have a sales. Sales में we have a OR order. CS actually cash sales. Cash sales का concept क्या है?
only cash payment, no credit. This is for one-time customer only. The customer who do one-time order only, we do only cash sale. Yoga cash sale. Complaint also, just like a service department receive the complaint from the customer. If you found product is defective, damaged, we do the return process. RE bonds, return order. RE bonds, return order. और अभी कोई एक और है, we have agreement, outline agreement. Outline agreement का concept क्या है? It is a long-term agreement with the customer, with the company. Company know this is my regular customer. He every month he orders a certain quantity of material product. So why not we can do the agreement with the customer for 1 year? Okay, we will deliver the product on time to the customer for a desired quantity. That contract will do with the customer. That is called outline agreement for delivering, scheduling, for schedule for delivery and deliver the goods to the customer on time. That is the agreement we do. So यहाँ पे we have importance of different document. And this document is called IN for inquiry, QT for quotation, OR for standard order. Okay, standard order means sales order. Then BV cash sales, no credit, only cash payment. Rush order. Rush means urgent. Urgent means sometimes customer need an urgent delivery of the goods. So we do the urgent order. That is called rush order. Return. That means we do the return process where the customer want to return the goods. We do the return order process. So that is the concept we have. Clear? So we have to Yes, know about this document in the sales and distribution module. And simple concept as sales and distribution ka selling the product through the distribution channel. We not directly give to the customer hand. It will be coming to the customer hand by distributor, dealer, retailer, wholesaler. Right? Clear? सर ये V0 Any? V8 की कोड है क्या उसका? हाँ ठीक कोड करेक्ट ट्रांजेक्शन कोड ट्रांजेक्शन ये तो उसमें से ट्रांजेक्शन अब ये कोड है बनते हैं क्या? हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप डिजाइन होते हैं वी गो टू ओके, ट्रांजेक्शन कोड वी कैन सी ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप तो अभी हमको विल गेट द सर्वर एक्सेस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास विल गेट द सर्वर एक्सेस तो आई विल शो एवरीथिंग इन द सर्वर कि हाउ वी कैन एक्सेस टू द सिस्टम बाय ट्रांजेक्शन कोड की कोड एंड सम अदर okay ओके, so hope ओके, we'll get the server by tomorrow today or tomorrow so we can access to the system. Otherwise, tomorrow also we have a session to understand the complete process of sales and distribution. And also we have to know the role and responsibility of the consultant in the project, like implementation and support. So we'll also discuss about this role of the consultant in the different project. Okay, clear? ओके, ओके, तो यस सर, अभी अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ना. We just take a only for 5 minute break and we'll come ओके, back and then we can continue till as per your flexibility. If till say 6 o'clock or 6:15, we will wind up. We'll try for श्योर six सर, maximum 6:15, है ना? So यस just सर, नो प्रॉब्लम, we'll take a only 5 minute break and we'll be come back and we'll continue, है ना? To understand this यस सर, concept यस very well. यस सर, Okay? Yeah. यस सर, Give me ओके, 5 minute यस, break. Yeah. ओके Okay. सर।
Hello. Hmm. Yes, sir. Okay, so let's we continue now. Okay. Yes, sir. Hmm. चलेगा. Hmm. हाँ, in sales, basically we have to know about the sales document. जैसे मैंने बताया कि inquiry, quotation, order is the main sales document we have to understand the inquiry, what is the concept of inquiry, what is the concept of quotation, what is the concept of order, and even though we have to know what is the functionality of the sales document. यानी inquiry है तो pre sales. Obviously inquiry को हम कभी भी next delivery नहीं कर सकते, billing नहीं कर सकते. Quotation also the same. तो ये अलग अलग document we have a different functionality. We can say inquiry not relevant for billing, not relevant for delivery. Quotation also the same. But order, yes, order is delivery related, billing relevant also. So what is the control in that document? So we have to understand the document structure. Okay, उसमें हम सब ये सब हम just like I'm giving the brief, but we have to go in depth of that in the coming session. So in the sales document, we have to know the three level document structure: header, item data, and schedule line. Header, where the customer information, item data, particular line item information, product information, schedule line data, date of delivery information. Yani तीनों information is very important. All three information is very important. Header, customer, who the customer, order the product, item data, which product you order, and when the product is delivered to the customer. That is called schedule line data. So we have to know this three level structure: header, item data, and schedule line data in the sales. Plus delivery also we have to understand, and billing also we have to understand. Right. So this is the Yes, level sir. we have to know in the sales. And in the sales and distribution, pricing is the one of the important. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो व्हाट वी वांट प्राइस, इसका प्राइस क्या है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. तो अब प्राइसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल. एंड प्राइसिंग we can say not like same for all customer, correct? We're not giving same price for all customer for the same product, even though we're Correct. not giving same price for all product to the same customer. Product wise price is different, customer wise price is different. So that process of pricing, how client will want the differentiate for pricing for the customer, for pricing for the product, we have to configure. So there is a condition technique, we can say. Condition technique is the technique we apply for pricing for the customer differently. यानी ऐसा टेक्निक जिससे हम प्राइस को अलग कस्टमर अलग हर कस्टमर के अलग करते हैं. इसी टेक्निक फॉर विच वी बाय विच यूजिंग we have a different price for the different product. That technique we have to design. And that technique have lots of configuration, condition table, access sequence, type. Condition type means pricing element like price, discount, tax, freight charges. So बहुत सारी चीजें हैं. We have to understand the pricing structure. So we have to go to the pricing to understand, and we have to know some free goods also. Buy one get one free concept. We're not charging to the customer. We're giving free of cost. That are also very playing the very important role for free good determination, right? And some Yes, of the sir. basic topic we have: partner determination, material determination, item board, numbers of topic. I think you have received some course structure. There you can see lots of topic we have to understand the process in the sales and distribution model. And after the sales topic, also we have to know the basic, not complete, because see, shipping is a part of different module. And that module which is related to the shipment process, logistic, shipping, loading, transportation. That concept of we have to know under the shipping, what kind of delivery document we use, what is the process or schedule for delivery, where the product will be dispatched, which point the product will be dispatched, that is called shipping point, where we store the product, and कहाँ पे product हम रखते हैं warehouse. That is the concept we have to know in the shipping, storage location. And in the delivery also, we have to know the concept of different delivery document. जैसे for example, I have given 4 different delivery document, 2 character document. LF, standard delivery. Standard delivery in the sense, customer order and we deliver the good to the customer. That is called standard delivery, outbound delivery. But sometimes when customer do the complaint, he want to return the good. So we do the return delivery, returning the good to our warehouse. That is called LR. LR stands for return delivery. We giving free sample to the customer. We're not charging to the customer. That is called delivery without order. Nothing. We don't do any order process. Direct we give the free sample to the customer. There is a replacement delivery. Replacement delivery means from one plant to another plant, we transfer the stock. यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे we moving the stock. That is called replacement delivery. That concept we have to know the delivery document.
And billing also we have to know. Billing is the last step in the sales cycle. Billing, we have a billing document. Billing document basically used for service products. That is called billing plan. We have a service product. For that, we have billing two types. Periodic billing, and we do the monthly maintenance charges to the customer for monthly payment for maintenance. That is periodic billing. Or milestone means a big project where the product is going to install to the customer location. It's expensive product. It takes time to install completely. Phase 1, 30%, phase 2, 20%, phase 5, 3, 40% something. So for that, we do the billing, milestone billing. Milestone billing. Expensive product, we do the milestone billing. To payment, phase by phase. How much portion completed, customer will pay for that. And at the time of cancellation invoice, suppose we need a correction, change in the invoice. We wrongly send the invoice to the customer, you wrongly prepared the invoice. We do the cancellation. We have a process of cancellation of invoice. So we have to, for concept of invoice cancellation also we have to. And in the billing also, we have types of billing document. 3 different billing documents generally we use most frequently in the sales. Order related billing, delivery related billing, intercompany. But apart from that, also we have credit memo, debit memo. That is also part of the billing. But most frequently used billing documents, order related billing, delivery related billing, intercompany. Order related billing means once customer do the order, we do the billing. That is called advance payment. Or we can say like a service product, we don't have delivery process. We don't require delivery. Only order, then billing. That is called order related billing. Yeah, return order. When customer returning the goods, we do based on return order, billing, payment, return to the customer. Delivery related billing means the customer do the order and product delivering to the customer, then we do the billing. That is called delivery related billing, F2. IV stands for intercompany billing. Intercompany billing between two companies. Let's take your company example. You're in the energy solution. Your company also have some other division like Godrej Interior. So suppose Godrej Interior has required some specific product which is not available in Godrej Interior plant. And this product is available in your energy solution plant. That is a different company, but it's the part of Godrej only. So when they want the product will be come out from that another company code plant to your company code plant or directly delivered to the customer, that billing which called intercompany billing between two company code. The company has two company code. Godrej has two company code, Godrej Interior, Godrej Property, Godrej in Energy Solution. So any billing between two company code we do, that is called intercompany billing we have to know. That concept also important we have to know in the sales. And some of the special topics also we have included here, that is called intercompany sales process. So intercompany sales process, third party order process. Third party order process, just like most of the e-commerce company they are following. The product is not manufactured by company itself. It is a simply delivered by third party vendor to the customer, just like Flipkart, taking the order from the customer and forwarding to the third party vendor. And third party vendor delivered the goods to the customer. That is called third party order process. Individual purchase order is the same, like we purchasing the product from the vendor, then we selling to the customer. And this is one of the concept called consignment. Consignment actually most of the FMCG company use. Beverages company, FMCG company use. What company do for consignment sales is they keeping the stock, their own stock, to the dealer's place. Okay, the company keeping the stock to the dealer's place, and from there they start selling to the end customer. That concept is called consignment sales. So that concept we have to consignment sales process. And there is some of the special topic we have a rebate. Rebate is a one type of discount. Rebate is a one type of discount. It's given to the customer once payment is done. You know, the payment done by customer, he gets some amount back to his account. That amount is called rebate amount. Rebate is a one type of discount. Basically, company will give it to the customer after the payment is done. That is called process we have to know, rebate processing. And integration. Integration, just like we are connected to the different module. Okay. So that is called integration. Connectivity with other module we have to know. Integration with the finance module, integration with the
production planning, integration with the material management, integration with the logistic execution. So that concept we have to know in the integration. Okay. And the role of consultant. When we're working in the project, what is the role of consultant? What is the responsibility? So that responsibility, which is under the methodology, that methodology we follow while working on the implementation project. When we work in implementation project, we follow this methodology. And we have to know all the concept based on real-time scenarios. What is actually we do in the real time? The training based on real-time scenario where we understand the concept for the sales process based on company business process requirement, how we collect and how we go in to mapping the system, right? Here, Yes, ये sir. हो गया brief of SAP introduction about the different areas, module of SAP SD. Apart from that, what are the types of project? What are the role of consultant? What are the profile we have in the company as a consultant, as a user, like that, right? ये हो गया तो अभी थोड़ा सा brief of we'll have to discuss about the ASAP methodology to know at least what is the role of consultant, but that also we will discuss by in the next class in depth. Okay, तो अभी क्या करते Yes, हैं sir. कि we'll plan for the tomorrow also, है ना? Tomorrow what time is comfortable in morning, because we also plan according to that. चलेगा सर, कोई भी मॉर्निंग में आफ्टर, मतलब जो भी आप लोग ये करेंगे आप बताएंगे सर। ये कल तो छुट्टी है, कोई इशू नहीं। एक्चुअली हाँ मॉर्निंग में आई हैव इधर आफ्टर 7 o'clock यानी 8 o'clock आई एम फ्री till after before afternoon. So you just decide 8 to 10 we can do, yeah, 8:30 to 10:30. Yeah, we can like that we can plan. Fine. चलेगा सर, 9 to 11 चलेगा सर, 9 to 11। हाँ हाँ विल ट्राई फॉर 9 to 11, ठीक है 9 to 11 भी कर चलेगा सर। लेंगे, है ना, ठीक है हाँ 9 to चलेगा 11 सर। कर लेंगे कल। तो आई हाँ विल चलेगा। इन्फॉर्म इन द लिंक सर वही दिस भेजेंगे क्या? ग्रुप। अमृत ही भेजेंगे लिंक? हाँ लिंक, हाँ लिंक वही रहेगा, they will provide the same link, only we join on that time. So just ओके drop ओके। the message after this session, we will be connect by 9 o'clock in the morning, and we ओके। plan for the 9 o'clock in the morning also to join the आपको session, चलेगा ना सर right? मॉर्निंग Clear? 9 में? What? आपको चलेगा सर 9 o'clock? नहीं तो हम 8:30 हाँ भी मैं कर मेरे तो कोई issue हाँ 8:30 also fine, 8:30 also can plan. तो we do want the 8:30 we plan है, 8:30 is fine, ठीक है 8:30 कर नहीं। लेते चलेगा हैं। सर, चलेगा। Okay, हाँ ठीक है। So just we can utilize few more time here. So let's just not going too much about this methodology, because we will have to discuss more about this ASAP methodology in the tomorrow session. We can understand. So I'm just चलेगा सर। giving the few point about the ASAP methodology. ASAP methodology is called A stand for accelerated SAP. So we already discussed SAP stand for system application products in data processing, right? So ASAP चलेगा। methodology क्या है? It is the complete guideline for the consultant to working on the project. यानी कि कंसल्टेंट को एक गाइडलाइन मिलता है whenever he involve the implementation project, so he had to follow this methodology. Okay, he has to know this methodology. Okay, whenever we Yes, working sir. with the SAP project, we work for this methodology, and this as a methodology consists of complete guideline for implementation project, and it has total 5 pages. Okay, total 5 pages. That Okay. we can say also roadmap for the SAP implementation. These are project preparation, business blueprint, realization, then final preparation, go live, and support. Okay. ओके। So as a consultant, we involve from the business blueprint phase. ठीक है, हम कहाँ से involve होते हैं? Business blueprint phase से involve. So we are not involved in the project preparation phase. In project preparation phase, our management team, just for example, my client is Godrej, and I'm working with the Accenture. So from my company, my top management team, project manager, delivery head, senior most person, plus from the client side also, Godrej CEO, VP, and they are involved. So इसमें what their job? The job is to know the requirement, to understand their business, sorry, to know the requirement, what are the total cost of implementation project, how many system required for implementation, what are the total date for implementation, when the project will be start, when the project will be complete, what are the total team size will be there in the project. मतलब ये internally discussion with the client about
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ड्यूरेशन एंड टीम साइज, ये सारे डिस्कशन वी कम अंडर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे. देन कम टू द नेक्स्ट फेज. Next phase is business blueprint phase. Business blueprint phase मतलब requirement gathering. It is the phase where we collect the requirement from the client about their business process requirement, है ना? In this phase, ओके we are talk to the coordinate core user of the client. So business blueprint phase is called requirement gathering phase. We gather the requirement from the core user of the client who provide the complete information of their business process. And whatever they give the requirement, we write the document that is called as is document. एंड सेम वी गोइंग टू डिलीवर इन द एसएपी टू बी डॉक्यूमेंट. अब यहीं पे क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट हमने क्रिएट किया, वी हैव राइट द डॉक्यूमेंट एंड वट एवर द रिक्वायरमेंट गिवन बाय क्लाइंट यूजर, वी सेम वी गो टू द इम्प्लीमेंट एसएपी, है ना? यही चीज है ना, जो आपने करेक्ट रिक्वायरमेंट लिया वही को आपको बना के देना. अगर यहाँ पे करेक्ट पता चलता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल टू द एसएपी स्टैंडर्ड, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है एसएपी में फिट नहीं हो रहा है एसएपी स्टैंडर्ड में, तो क्या हुआ? गैप आ गया. गैप बिटवीन क्लाइंट रिक्वायरमेंट to the SAP standard. ठीक है? So that time we need करेक्ट a technical consultant help, ABAP. They will coordinate with us. They will do some change the SAP standard and what the requirement. According to that, they will design the customize and then give it to us. Now you can work on this system to do the configuration. Okay, that is called customization. Okay, as is to be processed. वंस वी प्रिपेयर द फाइनल ब्लूप्रिंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि अभी उनकी जो रिक्वायरमेंट है यही चीज है, यही चीज है. हमने वो फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया, अब उस पे वो लोग साइन करते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग द बिजनेस ब्लूप्रिंट, फाइनल ब्लूप्रिंट, वी विल सेंड टू द डॉक्यूमेंट टू द कोर यूजर ऑफ द क्लाइंट एट द साइन ऑफ द ब्लूप्रिंट कि दिस इज द रिक्वायरमेंट आई वांट इन द एसएपी सिस्टम. Once they sign the blueprint, then we come to the third phase, realization phase. In this phase, we are involved in the project implementation. तो realization phase क्या मतलब है? Configuration phase, ना? Configuring the client business process into the SAP, mapping the client business process into the SAP. तो यहाँ पे हम different module consultant, we work with the different areas to configuration, right? We do the configuration in the different areas as per the different consultant modules. Then after we come to the final. अब जब भी हमने बना दिया, it not directly we give it the client handover. हम ऐसा नहीं ना कि जो भी बनाया हमने दे दिया, लो अब आप यूज करो, नहीं. उससे पहले हम उनको बोलेंगे टेस्ट करो, डू द टेस्टिंग. दे विल डू द टेस्टिंग, है ना? टेस्टिंग यानी जो भी हमने बनाया इट विल वर्क देयर सिस्टम मोड, है ना? यही होता है ना टेस्टिंग, कि हमने जो बना के, जैसे कोई लैपटॉप ही हमने बनाया तो उसको पहले हम टेस्ट करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं. और करेक्ट जिसके लिए हमने बनाया उसको भी बोलेंगे चेक करो ये लैपटॉप सही से चल रहा है कि नहीं. उसको बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन फेज, टेस्टिंग फेज. टेस्टिंग फेज में वी डू द टेस्टिंग, we ask to the user to do the testing, check the thing what we have done. Once testing is done, then we give the training to their employee into the training कि अब हमने जो बनाया उसको कैसे यूज करना है, how use this software. ठीक है? This is called यस training give to the consult user. And once training is done, then project is completed. Then we hand over to the client. That is called go live. Go ओके live means the day from where the client started using the SAP system. Okay, तो go live means वो दिन से वो client अपना start कर देता है system को use करना. The date from where the client will start using the SAP, that is called go live. यानी वो do day to day transaction SAP system. ठीक है? करेक्ट After go live, we have support. यानी कि पहले क्या होता है ना कि मैंने जैसे implementation किया तो few month हम कंपनी क्या बोलती है कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दो. हमने implementation जस्ट कंप्लीट किया तो उनको 2-3 महीने फ्री में दिया गया सपोर्ट. ठीक है, उनको फ्री में सपोर्ट मिला. फिर उसके बाद हम चार्ज करना शुरू करते हैं क्लाइंट को, तो एक अलग प्रोजेक्ट हो जाता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट हो जाता है. पहले इनिशियली वी गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट, देन आफ्टर वी स्टार्ट चार्जिंग टू द क्लाइंट फॉर द सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट में सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इश्यूज. तो अब ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, तो वी हैव रिक्वायर्ड टोटल 3 सर्वर. सर्वर चाहिए, 3 सर्वर चाहिए. डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन. डेवलपमेंट सर्वर, अब यहाँ पे ट्रेनिंग में भी हम लोग वही सर्वर यूज करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर. डेवलपमेंट सर्वर यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन वी डू इन द डेवलपमेंट सर्वर. क्वालिटी सर्वर सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, वो क्लाइंट विल चेक, क्लाइंट विल डू द टेस्टिंग द क्वालिटी सर्वर फॉर टेस्टिंग पर्पस. एंड प्रोडक्शन सर्वर इज द लाइव सर्वर. लाइव सर्वर मींस क्लाइंट दे यूज द डे टू डे ट्रांजैक्शन इन दैट सिस्टम. लाइव सर्वर बोलते हैं जो उनका अपना खुद का सर्वर होता है जिसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते, वी कांट एक्सेस टू द सर्वर.
ये 3 सर्वर we have required for the client for their implementation, development. Development we use in the realization phase. Quality we use for final preparation phase. Go live के time we hand over to the client to use the production server. Client क्या करता है, production server पे अपना काम start कर देता है. Clear? ओके ओके तो ये 3 सर्वर का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कल फिर से कनेक्ट करेंगे और इस एसएप मेथोडोलॉजी के बारे में इन डेप्थ में समझेंगे, व्हाट द रोल एसएप मेथोडोलॉजी. चलेगा फिर उसके बाद हम एचडी के अंदर में क्या क्या एरिया जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और अगर कल हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास है वी विल हैव ए सर्वर एक्सेस. इन दैट आई विल explain about the how we do the configuration and how we can check the structure in that. Okay, ठीक है. चलेगा तो सर. हम लोग कल यस प्लान करते हैं 8:30 को, हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, यू जस्ट गिव द कंफर्मेशन एंड वी कैन कन्वर्ट टुमारो 8:30. राइट? क्लियर? श्योर सर. यस सर. ठीक है, कुछ आज उसी नोट्स तरीके से प्रिंट हैं. आउट लेना है मुझे मेरे एंड से. नहीं, सॉफ्ट कॉपी हम दे देंगे. सॉफ्ट कॉपी दे का देंगे. प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, नहीं तो यू कैन कीप इन योर लैपटॉप. अच्छा. तो यस जस्ट सर. इन द ग्रुप you just share your mail ID, है ना, in a WhatsApp group. Just share the mail ID. So I'll just provide some soft copy for the चलेगा. training material. Okay, clear? यस सर. Yeah. यस सर 100. Okay then, huh? So see you tomorrow चलेगा on सर. the same time. Sorry, not same time, 8:30. We'll connect morning and we'll यस सर. discuss यस few more points in the SAP. Clear now? यस सर. Okay? यस सर. क्लियर Yeah. क्लियर. यस. ओके Okay. ओके. Okay then. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी Bye. मच. Thank ओके you. सर. Thanks.